Hello friends, welcome all of you. In today's video, we learn about the nursing care plan on acute respiratory distress syndrome or respiratory distress syndrome or shock lung. This is very important nursing care plan for the practical file work purpose or for the examination purpose. And this is very important care plan. तो आइए देखते हैं ACP on ARDS या acute respiratory distress syndrome या जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या शॉक लंग के नाम से भी जानते हैं। नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। मीन्स एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS ऑल्सो नोन एज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस syndrome and shock lung means acute respiratory distress syndrome को हम respiratory distress syndrome या shock lung या lung shock के नाम से भी जानते हैं। Next, acute respiratory distress ARDS is a type of respiratory failure characterized by rapid onset of widespread inflammation of the lungs. Next, acute respiratory distress syndrome is a life-threatening lung condition. It is a form of breathing failure that can occur in very ill or severely injured people. Next, it is not a specific disease. Here, it starts with swelling of tissue in the lungs and buildup of fluid in the tiny air sacs that transfer oxygen to the bloodstream. This leads to low blood oxygen level. Next, ARDS is similar infant respiratory distress syndrome, but the cause and treatment are different. ARDS can develop in anyone over the age of 1 year old. Next, defining characteristics means here the sign and symptom of this disease here: shortness of breath, fast labor breathing, bluish skin and fingernail color, rapid pulse. नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, नर्सिंग केयर प्लान एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या लंग शॉक। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो डायग्नोसिस होगा इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट डायग्नोसिस होगा। तो आइए देखते हैं इसका नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल। तो यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। Here patient says that I can't breathe easily. Next, objective data here: assess abnormal breath sound, crackle. Next, raunchy wheeze sound here: assess airway for patency. Next, assess respiration quality, rate, pattern, depth, flaring of nostrils, dyspnea on exertion. These are the objective data. On the basis of these data we write here the nursing diagnosis. तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा हमारा इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू क्रोनिक कफ और स्पूटम प्रोडक्शन, ये हमारा यहाँ पर डायग्नोसिस होगा। नेक्स्ट, गोल होगा टू मेंटेन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये गोल होगा। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन और रेशनल, यहाँ पर मीन्स कौन कौन से हम नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, और रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंटरवेंशन। तो इस तरह से यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, टीच द पेशेंट द प्रॉपर वे ऑफ कफिंग एंड ब्रीदिंग एयर। एग्जाम्पल, टेक ए डीप ब्रीथ, होल्ड फॉर 2 सेकेंड एंड कफ 2 or 3 टाइम इन सक्सेशन। ये रेशनल होगा द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिमूव मोस्ट सिक्रेशंस इज कफिंग। तो ये फर्स्ट इंटरवेंशन था एंड इसका रेशनल। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्टिंग पेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, जो हम पेशेंट को जब केयर प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद उसको लिखा जाता है। तो केवल हम यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशन और रेशनल लिखते हैं। और सेकंड देखते हैं, educate the patient in the following: optimal positioning, sitting position, use of pillow or
hand splint when coughing. Next, use of abdomen muscles for more forceful cough, use of the hub technique. Next, use of incentive spirometry. Next, importance of ambulation and frequent पोजीशन चेंज. इसके रेशनल देखते हैं, मीन्स ये अपने इंटरवेंशन से क्यों प्रोवाइड कराते हैं. फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द प्रॉपर सिटिंग पोजीशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ द एब्डोमेन प्रमोट इफेक्टिव कपिंग बाय increasing abdominal pressure and upward diaphragmatic movement. Control cupping method help mobilize secretions from smaller airway to large airway. Because the cuffing is done at very times, ambulation promote lung expansion, mobilizes secretions and lesion atelectasis. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर थर्ड ईयर. पोजीशन द पेशेंट अपराइट इफ टॉलरेटेड. रेगुलर चेक द पेशेंट्स पोजीशन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन इन बेड. रेशनल होगा, दिस पोजीशन प्रमोट बेटर लंग एक्सपेंशन एंड इम्प्रूव्ड एयर एक्सचेंज. नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ इंटरवेंशन. परफॉर्म नेजोट्रेकियल सक्शनिंग एज नेसेसरी स्पेशली इफ कफ इज इनइफेक्टिव. रेशनल होगा, suctioning is needed when patient are unable to cough out secretions. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं. मेंटेन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एज नीडेड. रेशन होगा, इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी ऑफ इंस्पायर्ड एयर विल रिड्यूस थिकनेस ऑफ सिक्रेशंस एंड एड देयर रिमूवल. नंबर सिक्स इंटरवेंशन देखते हैं. एनकरेज पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 3 लीटर per day within the limit of cardiac reserve and renal function. रेशनल होगा, fluids help minimize mucosal drying and maximize ciliary action to move secretions. Number 7 intervention होगा, give medications as prescribed such as antibiotics, mucolytic agents, bronchodilator, expectorants, noting effectiveness and side effects. रेशनल का, ए वेराइटी मेडिकेशंस आर प्रिपेयर टू मैनेज स्पेसिफिक प्रॉब्लम. मोस्ट प्रमोट क्लियरेंस ऑफ एयरवे सिक्रेशंस एंड मे रिड्यूस एयरवे रेजिस्टेंस. नंबर 8 इंटरवेंशन देखते हैं. कोऑर्डिनेट विद ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट फॉर चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड नेबुलाइजर मैनेजमेंट एज इंडिकेटेड. रेशनल होगा, टू मोबिलाइज सिक्रेशंस फ्रॉम स्मॉलर airway that cannot be eliminated by means of coughing or suctioning. Number 9 intervention देखते हैं. Provide postural drainage, percussion and vibration as ordered. Here रेशनल होगा, postural drainage help drain fluid out to the lungs. Number 10 intervention. Provide oral care every 4 hourly. Here रेशनल होगा, oral care freshens the mouth after respiratory secretions have been expectorated. Number 11 intervention. Here if the secretion cannot be cleared, consider the need for an intubation. रेशनल होगा, intubation may be needed to facilitate removal of tenacious and copious amount of secretions. Number 12 intervention. Educate patient on coughing, deep breathing and splinting technique. Here रेशनल होगा, patient will understand the underlying principles and proper technique to keep the airway clear of secretions. Number 13 intervention. Provide patient understanding about the proper use of prescribed medications and NLR. रेशनल होगा, understanding prescriptions promote safe and effective medications administration. Number 14 intervention देखते हैं. Consider the need of a humidifier in home care settings. ये रेशनल होगा, this facilitate liquefaction of the secretions. Number 15 intervention होगा, instruct patient about the need of adequate fluid intake even after hospital discharge. रेशनल होगा, hydration facilitate easy elimination of the secretions. After these interventions हम नर्सिंग केयर प्लान का यहाँ पर एवेल्यूशन लिखते हैं. तो यहाँ पर एवेल्यूशन होगा इस केयर प्लान का. मेंटेन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस. तो ये तो हमारा फर्स्ट केयर प्लान. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड. केयर प्लान सेकंड यहाँ पर इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. ईयर सेम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप, नर्सिंग असेसमेंट,
नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवेल्यूशन, जो हम केयर प्लान के लास्ट में लिखेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। Here subjective data, patient says that I am taking respiration only in upright position. Here objective data देखते हैं, assess and record respiratory rate and depth of at least every 4 hour, observe breathing pattern, next auscult breathe sound at least every 4 hour, pulse oximetry, also here check the oxygen saturation. Here nurse diagnosis, here ineffective breathing pattern related to airway obstruction, goal होगा patient maintain an effective breathing pattern. Nursing intervention and their rational, here first intervention, here place patient with proper body alignment for maximum breathing pattern. Rational होगा as sitting position permit maximum lung excretion and chest expansion. नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं, encourage sustained deep breath technique, include increases oxygenation and prevents atelectasis. ये पर रेशनल होगा। नंबर थर्ड इंटरवेंशन और उसका रेशनल देखते हैं, एनकरेज डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग फॉर पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज। रेशनल होगा यहाँ पर, दिस मेथड रिलैक्सेस मसल एंड इंक्रीजेज द पेशेंट्स ऑक्सीजन लेवल। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन, मेंटेन ए क्लियर एयरवे। रेशनल होगा, encourages the patient to mobilize their own secretions by effective cupping, facilitate adequate clearance of secretions. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन होगा, suction secretions as necessary. रेशनल होगा, suctioning help to clear the blockage in the airway. नंबर सिक्स इंटरवेंशन, stay with the patient during acute episode of respiratory distress. Here रेशनल होगा, this will reduce the patient anxiety, thereby reducing oxygen demand. Number 7 intervention, ambulate a patient as tolerated with doctor's order 3 times daily. Rational होगा, ambulation can further break up and move secretions that block the airway. Number 8 intervention देखते हैं, encourage frequent rest period and teach the patient to pace activity. Rational होगा, extra activity can worsen shortness of the breath, ensure the patient rest between strenuous activities. Number 9 intervention, educate patient or significant other on proper breathing, coughing and splinting method. Here rational होगा, these allow sufficient mobilization of the secretions. Here provide respiratory medications and oxygen as ordered. Here rational होगा, beta adrenergic agonist medications relax airway, smooth muscle and cause bronchodilation to the open airway passes. आफ्टर दीज इंटरवेंशंस हम यहाँ पर इवेल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ होगा इवेल्यूशन। नाउ पेशेंट मेंटेन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, जो हमारा गोल था टू मेंटेन एन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, वो हमने अचीव किया है बाई दीज इंटरवेंशंस। तो इस तरह से यह सेकंड केयर प्लान कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड। यहाँ पर थर्ड केयर प्लान होगा इम्पेयर्ड गैस सेक्शंस, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल यहाँ हम स्टेप लेंगे, और नर्सिंग एवेल्यूशन वो हम लास्ट में लिखेंगे। फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा, एयर पेशेंट कंप्लेंट अबाउट फील रेस्टलेसनेस एंड लाइट हेडेडनेस। ऑब्जेक्टिव डाटा, एयर साइनोसिस, कफिंग, हाइपोक्सिया, abnormal ABG, hypercapnia, accessory muscle use, hypoxemia, decrease O2, shallow rapid breathing, wheezing. On these objective data and subjective data, these basis we write here the nursing diagnosis. यहाँ पर nursing diagnosis होगा impaired gas action related to collapse of the alveoli, acute respiratory distress syndrome. गोल होगा यहाँ पर to patient maintain optimal gas action. नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं, फर्स्ट इंटरवेंशन पोजीशन पेशेंट विद हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड इन ए सेमी पाउलरस पोजीशन, हेड ऑफ द बेड एट 45 डिग्री व्हेन सुपाइन एज टॉलरेटेड। रेशनल होगा अपराइट और सेमी पाउलरस पोजीशन अलाउ इंक्रीजेज थोरेसिक कैपेसिटी, टोटल descent of the diaphragm and increase lung expansion, preventing the abdominal content from the crowding.
सेकेंड इंटरवेंशन देखते हैं, टर्न द पेशेंट एवरी 2 hourly. रेशन होगा, टर्निंग इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट complication of the mobility. Number third intervention, encourage or assist with ambulation as per the physician's order. Rational होगा, ambulation facilitate lung expansion, secretions clearance and stimulate deep breathing. Number fourth intervention, if the patient is acutely dyspneic, consider having the patient lean forward over a bedside table if tolerated. Rational होगा, leaning forward can help decrease dyspnea possibly because gastric pressure allow better contraction of the diaphragm. Number fifth intervention होगा oxygen administration. Here supplemental oxygen may be required to maintain partial pressure of the oxygen PeO2 at an acceptable level. Number six intervention होगा help patient deep breathing and perform control cupping. Here this technique can help increase sputum clearance and decrease cup spasm. Number seven intervention, suction as necessary. Here suction clear secretions if the patient is not capable of effectively clearing the airway obstruction, block ventilation that impair gas exchange. Number eight intervention, pace activities and schedule rest period to prevent fatigue, assist with activity of daily living ADLS. Rational होगा, activities will increase oxygen consumption and should be planned so that the patient does not become hypoxic. Number 9 intervention, consider the need for intubation and mechanical ventilation. Rational होगा, mechanical ventilation provides supportive care to maintain required oxygen and ventilation. Number 10 intervention, administer medications as prescribed. Rational होगा, as therapeutic purpose. After these interventions, we rated the evaluation. यहाँ evaluation होगा, now patient maintain optimal gas exchange. तो ये तो हमारा थर्ड केयर प्लान. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ, एंजाइटी. इसका नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन एंड रेशनल स्टेप्स के बाद एवेल्यूशन हम लास्ट में लिखेंगे. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट फ्रिक्वेंटली आस्क अबाउट द डिजीज. हियर ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट लुकिंग एंजियस एंड रेस्टलेसनेस. Diagnosis होगा, on the basis of these data we write here the diagnosis, anxiety related to disease condition. गोल होगा to reduce anxiety. Intervention रेशनल देखते हैं. फर्स्ट इंटरवेंशन here, recognize awareness of the patient's anxiety. रेशनल होगा, acknowledgement of the patient's feeling, validates the feeling and communicates acceptance of those feelings. नंबर सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं. Use presence, touch with permission, verbalization and demeanor to remind the patient that they are not alone and to encourage expression or clarification of the needs, concern, unknown and questions. Rational होगा, being supportive and approachable promotes communication. Number third intervention, familiarize patient with the environment and new experiences or pupil as needed. Rational होगा, awareness of the environment, promote comfort and may decrease anxiety. नंबर फोर्थ इंटरवेंशन देखते हैं, interact with the patient in a peaceful manner. रेशनल होगा, the patient feeling of stability increase in a calm and non-threatening environment. Number fifth intervention, accept patient's defense, do not dare argue on debate. Rational होगा, if defenses are not threatened, the patient may feel secure and protected enough to look at behavior. Number six intervention, converse using a simple language and brief statement. Rational होगा, when experiencing moderate to severe anxiety, patient may be unable to understand anything more than simple, clear and brief instructions. Number seven intervention, reinforce patient personal reactions to or expression of pain, discomfort of threats to well-being. Example, talking, crying, walking, other
Physical and non-verbal expression रेशन होगा talking or otherwise expression feeling sometimes reduces anxiety. नंबर 8 इंटरवेंशन देखते हैं यार. Lessen sensory stimuli by keeping a quiet and peaceful environment. Keep threatening equipment out of sight. Here रेशन होगा anxiety may intensify to a panic state with excessive conversation, noise, and equipment around the patient. Increasing anxiety may become frightening to patient and other. Number 8 9 intervention. Help patient determine precipitants of anxiety that may indicate interventions. Here rational होगा. Obtain insight, allow the patient to reevaluate the threat or identify new way to deal with it. Number 10 intervention. Allow patient to talk about anxious feelings and examine anxiety provoking situations if they are identifiable. Rational होगा. Talking about anxiety producing situations and anxious feelings can help the patient perceive the situation realistically and recognize factors leading to the anxious feelings. Number 11 intervention. Encourage the patient to consider positive self-talk like anxiety won't kill me. I can do this one step at a time. Right now I need to breathe and stress. I don't have to be perfect. Irrational होगा. Cognitive therapist focus on changing behavior and feelings by changing thoughts, replacing negative self-statement with positive self-statement aid to reduce anxiety. Number 12 intervention होगा. Avoid unnecessary reassurance. This may increase undue worry. Irrational होगा. Reassurance is not helpful for the anxious individual. Number 13 intervention. Assist the patient in developing new anxiety reducing skill. Example relaxation, deep breathing, positive visualization, reassuring self-statement. Rational होगा. Discovering new coping methods provide the patient with a variety of ways to manage anxiety. Number 12 intervention. Intervene when possible to eliminate source of anxiety. Rational होगा. Anxiety is normal response to actual or perceived danger. If the threat is eliminated, the response will stop. Number 13 intervention. Assist the patient in strengthening problem solving abilities. Highlight the logical strategies that the patient can use when experiencing anxious feeling. Rational होगा यहाँ पर. Learning to identify a problem and to evaluate the alternatives to resolve the problem help the patient cope. Number 14 intervention. Explain all activities, procedure and issues that involve the patient. Use non-medical term and calm slow speech. Do this in advanced procedure when the possible and validate the patient understanding. Rational होगा. With pre-admission patient education, patient experiences less anxiety and emotional distress and have increased coping skill because they know what to expect uncertainly and lack of predictably contribute to anxiety. Number 15 intervention देखते हैं. Instruct the patient in the appropriate use of anti-anxiety medications. Rational होगा. Short-term use of anti-anxiety medications can enhance patient coping and reduce physiological manifestations of the patient anxiety of the patient. Number 16 intervention. Tell the patient to limit use of central nervous system stimulants. Irrational होगा. Stimulants example caffeine, nicotine, theophylline, terbutaline, sulfate, amphetamine and cocaine can increase the physical symptom of anxiety. Number 11 intervention. Provide patient with a mean to listen to music of their choice. Rational होगा. Music is a simple, inexpensive, aesthetically pleasing means of alleviating anxiety. Number 12 intervention. Educate patient and family about the symptoms of anxiety. Rational होगा. If patient and family can identify anxious response, they can intervene earlier than otherwise. Number 13 intervention. Teach use of appropriate community resources in emergency situations. Example suicidal thoughts such as hotlines, emergency rooms, law enforcement and judicial system. Rational होगा.
On the method of suicide prevention found to be most effective in a systematic direct screening procedure that he has a high potential for institutionalization. Next, after these interventions we write here the evaluation, और यहाँ evaluation होगा केयर प्लान नंबर 4 का. नाउ एंजाइटी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5th एंड लास्ट केयर प्लान ऑफ दिस डिजीज. Here nursing assessment, nursing diagnosis, goal intervention, rational and evaluation. First subjective data. Their patient says that he is having no knowledge about ARDS. Objective data. Patient appear nervous and intimidated by his or her surroundings. Nursing diagnosis होगा knowledge deficit related to ARDS and its management. Goal होगा to improve level of knowledge. Nursing intervention and their rational. First intervention देखते हैं. Assess readiness to learn. Here rational होगा assessing their interest, emotional status and mental capacity for learning. Second देखते हैं assess the health literacy. Here rational होगा poor health literacy means a patient may lack an understanding of their disease, medications and when to seek care. Number third intervention. Create a quiet learning environment. Rational होगा if a patient is in pain, worried, upset or tired, then they are not in a state of mind to retain important information. Number 4 intervention. Use multiple learning modalities. Rational होगा verbal instructions along with written materials, instructional videos and illustrations are a few options. Number 5th intervention. Include family as requested. Rational होगा some patient may depend on family member and spouses for support. Identify the support person or caregiver that will benefit the most from teaching. Number 6th intervention. Teach patient and their families about ARDS, its etiology, manifestation and management. Rational होगा to improve knowledge. One intervention होगा discuss the need to stop smoking. Here breathing high concentration of the smoke or chemicals fumes can result in ARDS. After these interventions we write here the evaluation, और यहाँ evaluation होगा improved level of knowledge. तो इस तरह से हम यहाँ पर 5th केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो नर्सिंग केयर प्लान ऑन ARDS, acute respiratory distress syndrome या distress syndrome या shock lung. This is very important care plan for the examination purpose or for practical file work purpose, and this is also useful for the assignment work. फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू.